हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोमेटल ओपनिंग थ्योरी में प्रोटॉन पम्प थ्योरी या पोटेशियम पम्प थ्योरी या पोटेशियम हाइड्रोजन थ्योरी या इसको मैलेट पोटेशियम पम्प थ्योरी भी बोलते हैं. सो दिस वाज द रोल ऑफ पोटेशियम डिस्कवर्ड बाय इमामुरा इन 1943 and the whole theory was established by Leavitt in 1974. The whole process is divided into two parts: the opening and closing of the stomata. Opening is an active process where ATP is involved, and closing is a passive process where abscisic acid ABA is involved. Okay. So first step is the opening of stomata during the daytime. So what happens during daytime? The stored amount of starch in the guard cells in the presence of blue light, what happens? It converts into the phosphoenol pyruvic acid. Now this phosphoenol pyruvic acid in the presence of carbon dioxide and an enzyme called pep carboxylase converts into four carbon compounds, that is the oxaloacetic acid. Phosphoenol pyruvate is 3 carbon compound and this is 4, so one carbon dioxide is added into it, so it converts into oxaloacetic acid. So this all happens in the increased pH. Now this oxaloacetic acid in the presence of an enzyme called malate dehydrogenase converts into malic acid, and in this process NADPH2 is converted into NAD plus H plus. Now this malic acid is dissociated into an anion called the malate and an cation called hydrogen ion. Now this hydrogen ion goes out of the guard cell. This is the guard cell, so it goes out of the guard cell through the plasma, through the antipode that is present in the plasma membrane, and this K plus ion which is present in the subsidiary cells. These are the subsidiary cells. So from the subsidiary cells it goes inside the guard cell. More amount of potassium ion are influxed into the guard cell. Some of it combines with the malate anion and convert into potassium malate, and the potassium ions which are left unattached to malate, they are electrostatically balanced by the chloride ion which passively moves inside the guard cells. बिकॉज दीज आर प्लस, सो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है प्लस और माइनस. सो क्लोराइड आयन आर anions, so it moves inside the guard cell to balance it. Now this potassium malate, what happens, it increases the solute concentration, and you know that solute concentration increase means increase in diffusion pressure deficit. This result in the endoosmosis. Endoosmosis means from the subsidiary cells the water, or the epidermal cell if subsidiary cells are not present, the water enters into the guard cell. नाउ गार्ड सेल के अंदर जो है वाटर जाता है कहाँ, वैक्यूल में. सो वैक्यूल इज फुली extended and it result in the increase in the turgidity of the guard cell, and when they are turgid the stomata opens. Now what happened during the night? During night you know that respiration continues and but photosynthesis reduced. सो जो रेस्पिरेशन में CO2 यूज़ हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ नहीं होती है, दस इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस डिक्रीजेज द pH ऑफ द गार्ड सेल, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड जो है वो बन जाता है और उसकी वजह से pH रिड्यूस हो जाता है, 7 से कम हो जाता है मतलब. एंड एक तरह से स्ट्रेस कंडीशन जो है वो बन जाती है. तो स्ट्रेस कंडीशन की वजह से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्लांट जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, और ये एब्सिसिक एसिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है और वो जो वहाँ पे पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देता है. नाउ इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स हो रहा होता है जो कि एटीपी डिपेंडेंट होता है, इसको ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन होते हैं वो गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं
और गार्ड सेल से जब ये बाहर चले जाते हैं तो पोटेशियम, ये जो H+ आयन हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और अगेन पीएच और रिड्यूस हो जाता है। सो ये इंक्रीज्ड आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स H+ आयन्स एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है स्ट्रेस हार्मोन के इन प्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि ABA के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। सो जो मैलेट है वो क्या करता है, मैलेट आयन जो प्रेजेंट होता है वो H+ आयन जो हैं अब फ्री हो गए हैं उनके साथ मिलता है और अल्टीमेटली क्या बना देता है, इट कन्वर्ट्स बैक इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, पूरा बैक प्रोसेस होता है। तो जिसकी वजह से जो है आपके जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो इंक्रीज़ हुआ होता है पहले, वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सऑस्मोसिस होता है, यानी कि वाटर जो है वो गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये गार्ड सेल है तो गार्ड सेल से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जो है गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं और टर्गो प्रेशर का रिड्यूस हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग द नाइट। So this is the process of the stomatal opening explained by Levitt, and the name is potassium pump theory.